Hello, Assalamu alaikum. Welcome to the HR Pavilion brought to you by Miss Harim Siddiqui. So today we have a guest here, Miss Aisha from the Carnelian. She's a trainer and a consultant too. So welcome, ma'am. Ma'am Aisha, please tell us about yourself. Thank you so much for having me. I'm super excited to be here. So again, like mentioned, my name is Aisha. I've been a trainer for the last 5 or 6 years, but I've been associated with the Organizational Development and Training Fraternity of Pakistan for almost 10 to 11 years now. So Carnelian, in a nutshell, we call ourselves communications consultants. So we do everything ranging from learning, organizational development, training, PR, and even networking events to an extent, branding, e-modules. So a lot of our work is focused on communication. So as long as communication is a part of it, you will find Carnelian there. So communication is the key for you. Yeah, 100%. So what are your thoughts about mental well-being of your employees? Like how can your work get affected by the mental well-being? Okay, so well-being is a topic that we've been exploring for, I think decades now, but it's only recently, I believe, that it's really picked up pace. So organizations, communities, and just the world at large has finally begun to realize the importance of well-being everywhere. It's not just organizations, it is pretty much the country at large, and we could really use it as well. So well-being in a nutshell is about जिस तरह से हम अपनी हेल्थ को देखते हैं ना, अपनी जिस्मानी हेल्थ को देखते हैं, उसी तरह हमारी दिमागी वेल बीइंग भी आ जाती है. सो वेल बीइंग और वेलनेस इज एवरीथिंग. सो इट्स योर फिजिकल, इट इज योर इमोशनल, इट इज योर मेंटल, इट्स ऑल्सो योर स्पिरिचुअल. तो हम इसको प्यार से सेम्प मॉडल भी कहते हैं इसको. सो द स्पिरिचुअल फॉर एस, इमोशनल फॉर ई, मेंटल फॉर एम, एंड फिजिकल फॉर पी. सो अगेन इट्स एवरीथिंग कंबाइंड टुगेदर. एंड द थिंग इज कि अगर वेल बीइंग पे आप फोकस नहीं करेंगे, सो वी विल सफर नॉट जस्ट एज द इंडिविजुअल, बट इट्स गोइंग टू बी आवर कम्युनिटीज एंड इट इज गोइंग टू बी आवर कंट्री एज वेल. अगर हम खुद ठीक नहीं है, और आप खुद इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें अगर थोड़ी सी खराश महसूस होती है कभी भी, तो यू फील लाइक योर एंटायर बॉडी इज गोइंग डाउन इनटू शट डाउन मोड, राइट? एंड द सेम इज द केस विद एनीथिंग. फॉर एग्जांपल, यू आर डिस्टर्ब्ड एट वर्क. किसी छोटी सी बात, किसी ने आपको कुछ बात कह दी हो ऐसे, suddenly you're just going to be like, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? And छोटी चीजें होती हैं, and all of a sudden you realize that you're in a very negative space. So everything must go together. इस पे focus अब इसीलिए आता जा रहा है because हर चीज का connection है well-being के साथ. Just general your performance, whether it's at work, whether it's even if it's in the educational space. Definitely everything is related to overall well-being. Yes, because it's totally affecting your productivity, 100%. your overall productivity, 100%. how you are carrying with that. बिल्कुल, 100%. So, what kind of workshops or programs your organization offers for your employees? Okay, so like I said, well-being वैसे तो is a segment in every workshop that we do. आप समझ लें, because everything is about कि आप अपनी outlook को किस तरह से improve कर सकते हैं on life. So that is everything, right? However, अगर थोड़ा हम specific होके इसको लेके चलें, so we have been conducting workshops on wellness at large, so wellness and well-being के ऊपर. We do workshops on well-being, we do workshops on psychological safety, we do workshops on managing stress, and so on and so forth. अब इसका थोड़ा सा skill से भी ताल्लुक है, but I would say it has it's more in line with culture building as well. तो for example, अगर organizations इस वक्त psychologically safe अपने आप को महसूस करती है ना, तो इससे बड़ा asset आपके पास कोई नहीं है, because you belong to a space where you can freely voice out whatever it is that you want to voice out. आपको कोई डर नहीं है कि कोई आपको जज करेगा कि आपने कोई जो बात कह दी है, कोई इसको गलत तरीके से तो नहीं मिसइंटरप्रेट कर लेगा. तो अगर आपको बहुत सोचना पड़ता है ना, so you're not part of a psychologically safe workspace. और अगर आप आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में इस बात को देखें भी और थोड़ा एक्सप्लोर भी करें, तो इसका बहुत ज्यादा ताल्लुक है ओवरऑल एंगेजमेंट से. So अगर एम्प्लॉय एंगेजमेंट सर्वे के रिजल्ट्स आप ऐसे एट लार्ज अगर आप देखते हो फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एट लार्ज, whether it is a local organization or an MNC for that matter, if you do not feel psychologically safe, there somewhere or the other you will feel disengaged, because we're no longer just working for a paycheck. There's no connectivity anymore. 100%. So hygiene factors, yes, definitely.
आपका पैसे ऑन चेक होने चाहिए, डेफिनेटली होने चाहिए, कोई भी नहीं काम करेगा पे चेक के बगैर. However, Yes. that's not the only thing. There is recognition, there is people making you feel appreciated. Maslow's hierarchy का तो आइडिया होगा Yes. थोड़ा बहुत. तो अगर आप हायरार्की को देखो, आपके बिल्कुल फाउंडेशन पे आता है आपके हाइजीन फैक्टर्स. सो वहां पे यू विल गेट योर जी अच्छा एम आई बेसिक Your वर्किंग basic कंडीशन. needs, commodities and all. एग्जैक्टली, वर्किंग Yes. कंडीशंस कैसी हैं आपकी, पैसे टाइम पे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, क्या फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है, ऑल ऑफ दैट. Yes. एज यू गो ऑन एंड अबव, जैसे जैसे आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ अपना सफर करना शुरू करते हैं, देयर इज अ मिड लेयर कॉल्ड लव एंड बिलोंगिंग Love एंड and सेफ्टी. belongingness. Yes. सो इफ आई एम नॉट फीलिंग सेफ, कहीं ना कहीं आई विल फील लाइक आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस स्पेस, एंड दैट इज वेयर माई परफॉर्मेंस स्टार्ट्स टू टेक अ हिट. दैट्स व्हाट इट इज. So, what do your clients demand about, well-being of your employees? I think okay, so that's an interesting question, and काफी इसका वैसे comprehensive जवाब है, लेकिन I'll try to sort of squeeze it into like a couple of minutes. So clients की obviously हर तरह की demand होती है. अब from a cultural standpoint या फिर a skill building standpoint, like I said, ये थोड़ा qualitative concept है, right? However, it is very very important. So clients को यही होता है कि जी, it's about making sure that good people stick around. अल्टीमेटली जो कि आपके अच्छे परफॉर्मर्स भी हैं और वो पॉजिटिवली आपकी वर्क स्पेस को इन्फ्लुएंस भी करते हैं. अब हाउ डू यू मेक श्योर दैट दैट बैलेंस इज मेट एंड देन इट्स रिटेन्ड एंड इट्स सस्टेनेबल एज वेल, राइट? अब उसके अंदर फिर यही आता है कि इनसे हमें कॉन्वर्सेशंस करनी है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन इन द कोचिंग रेल्म एज वेल. सो फॉर एग्जांपल, अगर आपके ऐसे लोग आपने पकड़ लिए हैं, तो आप उनके साथ वो कॉन्वर्सेशंस किस तरह से कर सकते हैं, सो दैट देयर इज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट, सो दैट दे अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है, अगर मैंने सिर्फ मेरा गोल नहीं हो सकता. सी द थिंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन इज दैट इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी, इट्स अबाउट द कलेक्टिव. मुझे सिर्फ ये तय करना है कि मेरा अपना रोल किस तरह से टाई इन करता है विद द ऑर्गेनाइजेशंस विजन, एंड अल्टीमेटली व्हाट ऑर्गेनाइजेशंस आर डिमांडिंग इज द अलाइनमेंट बिटवीन द टू. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी द इंडिविजुअल, इट इज कि अच्छा जी, अगर मैंने इदारे का गोल अचीव करना है तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ, और मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ. कोई भी एक अकेले नहीं कर सकता, साथ मिल के आपने टीम्स को चलाना होता है. सो टू दैट एंड देयर इज अ लॉट ऑफ टीम बिल्डिंग, ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन कल्चर बिल्डिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन एम्प्लॉय एंगेजमेंट, जैसे मैं पहले कह रही थी आपको. देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ, इमोशनल क्वोशिएंट के ऊपर. उस पर बहुत सारी कॉन्वर्सेशन हमारी होती है, एंड वो इसीलिए होती है बिकॉज लोग कहते हैं कि लोग बहुत कॉम्पिटेंट हैं आजकल की. अगर आप देखें भी जनरेशंस जो आ रही हैं, माशाल्लाह दे आर अमेजिंग एट व्हाट दे डू. Having said that, I think somewhere along the line, that part is something that we have to focus on if we want to go to the next level. Because वाकई research भी यही कहती है कि up until a certain point आपका IQ जो है ना, वो develop होना बंद हो जाता है. EQ, however, is something that you can work on for life. So it's never too late to start. But अगर ये नहीं होगा, तो chances of failure do go higher. So इसमें ऑर्गेनाइजेशन सबसे यही कह सकती है कि लोगों को इस बात का एहसास किस तरह से दिलाया जाए, एंड उसके बाद how can they take that message forward as well. That's great. This is I think the main question even I wanted to ask personally. With the student's perspective, what do you think like mental being is really important, because we are the generation gonna come next as being employees of any organization. So what do you think, like how important it is for us to cope up with these things to help in our mental well-being? Okay, so again, so for students, and again अभी recently मेरी interaction भी हुई है बहुत सारे students के साथ. we've been doing some work with students, तो बहुत सारे लोगों से इस तरह से बात भी हुई. there's a lot of Gen Zs that I have in my organization as well. So in essence it's very interesting to see the mix in my own organization, because there's the millennials, there's Gen Z, there's क्या होता है millennials से पहले वाले कौन होते हैं, baby boomers वाले आते हैं. So there's like 3 generations that are kind of
working together. And Gen Z के हवाले से, because अब ये लोग जाएंगे और eventually they will become part of different organizations. So there's just a couple of things. See, I know that there's a lot of work that they do as far as their individual goals are concerned, yes. right? And they're very, very driven. That's one thing I've noticed clear cut कि आपको drive दिखाई देती है, नजर आती है उनकी conversation के अंदर. I think from अगर advice थोड़ा कमिंग डाउन, लाइक आई सेड एंशिएंट, तो अगर एडवाइस देने की मैं बात करूं तो आई थिंक दैट्स जस्ट वन थिंग, एंड दैट इज इदारे एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड कम्युनिटीज वो अकेले नहीं बनते. दैट्स प्रॉब्ली द ओनली थिंग. एंड आई थिंक पार्ट ऑफ व्हाई वो वेल बीइंग भी हमारी कभी कभार इम्पैक्ट होती है इज बिकॉज जब आप हर दफा वो अपनी अपनी चीजों के पीछे लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट आना शुरू होगा. सो अब इट कुड बी नेगेटिविटी, एंड सबसे पहले वो मेंटल वेलबींग की मैंने बात की थी. सो दैट वाज स्पिरिचुअल, इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल, राइट? सो अब वहां पे जो मेंटल वाला पार्ट आता है, नेगेटिविटी ना यूं आती है. सो इफ यू आर ऑलवेज जस्ट थिंकिंग अबाउट things with a one track mind or you're only looking at your individual goals, कहीं ना कहीं आप उन नेगेटिव थॉट पैटर्न्स में ज्यादा चले जाते हो. तो हाउ डू यू ब्रिंग योरसेल्फ बैक एंड थोड़ा सा उसको पॉजिटिवली लेके चलें बाय सराउंडिंग योरसेल्फ विद द right people, right? And that is, I think, going to be my advice to kids, because they're great. I mean, they're so fun. I mean, there's so much that I learn with them on a daily basis. It's just वो बहुत ज्यादा कभी कभार ड्राइव, जब बहुत ड्राइव हो जाती है ना तो थोड़ा आप कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस हो जाते हो उसके साथ. एंड योर कैपेसिटी टू लिसन एंड लर्न फ्रॉम पीपल्स एक्सपीरियंसेस स्टार्ट्स टू गो a little, you know, and not that मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही trying to become a दादी and telling people कि नहीं ऐसे करना, not at all. I mean, you're great at what you do and stick to what you do, right? But I do know that there is a lot of power in the collective. And अगर collective की backing होती है ना, चाहे आप स्टूडेंट लाइफ में हो चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन लाइफ में हो, as a team you can do more. You can do so much more. And हमेशा goals जो हैं आप अकेले नहीं अचीव करते, the big goals. Impact अभी कहने को आई हैव अ वेरी इंडिविजुअल रोल, मैं अकेले जाके ट्रेनिंग करती हूँ, लेकिन मुझे इस बात का पता है कि 50% मैं हूँ सिर्फ, बाकी 50% मेरी आवाम है. If the audience doesn't resonate with what I'm saying, there is no point in what I just said. अमेजिंग बात कर दी होगी मैंने, लेकिन अगर वो ऑडियंस को नहीं समझ में आएगी ना, suddenly there's gonna be like, oh okay, there's a weird, there's no point, there's a disconnect, there's, you know, there's just, it's not going to create that impact. And impact अगर हमें create करना है, जो कि आप अब हम लोग की भी जिम्मेदारी है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आप लोग की जिम्मेदारी होती जा रही है, तो उसमें फिर impact का अगर सोच रहे हैं ना तो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा लेके चलना है. And I think that is, and if you want to work on that, of course ये बहुत बड़ी है, मैंने बहुत सारी बातें जरा जंबल अप करके बोली हैं, बट उसमें मैं यही आपसे कहूंगी, the takeaway again is कि surround yourself with good people, listen, learn and take away from experiences as much as you can, because वो आपके thought patterns को regulate करता है. And get sleep. That's also important. That's really important. Getting, I don't know, I think some kids really do get a lot of sleep as well, लेकिन some of them don't. And a lot of kids have really bad eating habits. अब तो I think थोड़ी awareness इस पे चल रही है, लेकिन I think जब हम लोग थे student life में, I had really bad eating habits. Junk food is there. Really bad eating habits, and अब जाके in my 30s मुझे एहसास हो रहा है इसका कि you know what, that really wasn't the right thing to do, and I'm still paying for it. So good eating habits, good sleep schedules, ये कहने को बहुत ही छोटी बातें लग रही हैं, लोगों को कहते हैं हाँ अच्छा है तो हम करते ही हैं, लेकिन हम नहीं करते. Just regulation से हमें करने की जरूरत है. Do that. Be positive, sleep well, eat well, you'll be okay. Okay. One more question I would like to ask, that what are the key factors that negatively, you know, affect your well-being? Okay. The employees out there in your organization, there will be some key factors, right? So the negative effect out there, how can, you know, it can be created? Okay. ये तो इसमें मैं तो आपको दो angles इसको लेके चलूंगी. कुछ factors ऐसे होते हैं that have to do with you personally, and कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि बाहर की आपको impact कर रही होती हैं. So there is an internal as well as an external locus of control, right? अब what are you going to do about that? तो उसमें हम कहते यही हैं कि control what you can control.
ठीक है, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, अपने ओपिनियंस, इन चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हो. जो बाहर एक्सटर्नल नॉइज है ना, यू कांट कंट्रोल इट एंड यू नीड टू मेक श्योर दैट दे डोंट कंट्रोल यू ईदर. राइट, तो उसमें जो फैक्टर्स अगेन इन्फ्लुएंस आजकल की, अगेन अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इस पे बात करूं, सो देखिए, एक तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम खासी है जो कि आई डोंट थिंक, हाँ, देयर इज इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री. हमें खुद ही पता है कि क्या चल रहा है आज पिछले 2-3 दिन से. अभी मैं आप लोगों से जो बात कर रही थी कुछ टाइम पहले कि जस्ट सिंपली अगर आपका ये मोबाइल डेटा ना काम करे तो हम कितना फंस रहे हैं. आवर ट्रांसपोर्ट इज बिकमिंग डिफिकल्ट. देयर सो मेनी थिंग्स जस्ट टू गेट दिस सिंपल पॉडकास्ट टुगेदर. हमें कितना ज्यादा टू एंड फ्रो करना पड़ा. सो देयर जस्ट दोस लिटिल थिंग. अब इसकी वजह से एक छोटी सी एक अच्छी चीज भी जो आप करने जा रहे होते हो ना, सडनली और जस्ट लाइक अब करने में इतना मसला हो रहा है इसको, you know, and just because of something like you have to put a lot of efforts into 100%. so yes, of course I can't say कि बिल्कुल ही हम पे इसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा, लेकिन वही बात है कि इसको हमें मैनेज करना है. बट अगेन यस, इसका इम्पैक्ट बहुत है. उसके अलावा वर्क स्पेसेस में अगेन आई स्टिल फील लाइक समवेयर अलोंग द लाइंस वी नीड टू bring in more positivity in the workspace. So if I am requesting the students or the Gen Z to do that, my request goes to the organizations as well, because abhi bhi in conversations, in fact I was just having a conversation with my colleagues और वो मुझे यही बात बोल रहे थे कि अभी भी there are things like in the workspace, by the way, ये हम घरों की बात नहीं करें, हम workspace की बात करें, that there's still things like fat shaming, there's still things like लोगों की appearances पे, ethnicity पे, gender, religion, all of that, there is so, it still exists. एंड आजकल के दौर पे जब इतनी अवेयरनेस है, आपने डीआई पे इतना फोकस किया है, व्हिच इज डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन, इतना ज्यादा, देयर इज सच अ बिग agenda for organizations, उसमें आपकी छोटी छोटी चीजों को, because this is part of our conditioning, so this is how we've been brought up, so I'm not really blaming anyone, लेकिन अब we are at that level when we should be able to control it. इतनी awareness हमारे अंदर आ गई है, but that still exists. फिर आपकी external noise तो exist करती ही करती है. There's also one more reason that I would like to shed light on is burnout. Again, there's this concept, and please allow me some time to share this concept with you. It's called the wheel of life. तो हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में बहुत करवाते हैं. इस व्हील पे 9 डायमेंशंस होते हैं आपकी जिंदगी को लेके. सो देयर इज योर फैमिली, देयर इज योर फ्रेंड्स, देयर इज योर स्पिरिचुअल एंगल, कम्युनिटी, पर्सनल डेवलपमेंट, हेल्थ, ऑल ऑफ दैट ऑन वन व्हील. और इसमें हम करते कुछ यूं, I'd like to even do it with you at some point as well. तो आप अपने आप को अपना ग्राफ प्लॉट करते हैं कि इस वक्त जहां पे मैं खड़ी हुई हूं, तो फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू आई रेट माई सेल्फ ऑन द हेल्थ डायमेंशन? Is it a 4, is it a 5, is it a 6 out of 10? और इसी तरीके से आप अपने आप को मुख्तलिफ डायमेंशंस पे प्लॉट करते हो और वो डायमेंशन को आप ज्वाइन करते हो, राइट? सो I've done this in a lot of workshops with a lot of big organizations, and सबका जो पहिया बनता है ना, that's all mostly all over the place. I would say up to 90% is all over the place. मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जा रहा होता है. तो अब आप इसको अगर गाड़ी से, इफ यू वर टू ड्रॉ द एनालॉजी, तो गाड़ी का पहिया होता है. गाड़ी का पहिया अगर इस तरह का होगा, स्टार शेप्ड का होगा, तो आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते. अगर पहुंच भी गए ना, तो यू विल बी टोटल्ड, द कार विल बी गॉन बाय द टाइम यू रीच द डेस्टिनेशन. एग्जैक्टली. सो दैट्स द सेम थिंग विद लाइफ. इफ यू आर नॉट गोइंग टू हैव दैट बैलेंस इन लाइफ, then you will be exhausted. You will not be able to, you won't be there for other people. Well-being का जो ताल्लुक है ना, सबसे पहले आपका अपना है. It's with the individual, you yourself. Then once that is in check, then it goes to your immediate peer group. Then it goes to the community. Then it goes to the nation, and then the world. Right? And आप अगर खुद अपना पहिया दुरुस्त नहीं करोगे, तो I mean, you're not going to get anywhere. You won't be able to do much for anybody else. And that is one of, I think, my biggest learning. So I'm a mom as well. I'm a trainer as well. And ये जो चीजें होती है ना, इसमें आपको इस बात का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि you have to be there and show up. And if you're not going to take care of that, then no one will really do anything. लोग पॉलिसीज आपके लिए निकाल देंगे. लोग बहुत, ऑर्गेनाइजेशंस बहुत काम कर रही हैं by the way इसके ऊपर. There are so many programs, there's so many avenues where you can work on your well-being. It's about you treating it as a priority.
तो if you're not going to do that, तो फिर फायदा नहीं है. It will start within. Yeah, 100%. What do you think that employees feel less stressed while working remotely? अच्छा, okay, so I'll kick off with my own opinion and then मैं बाकियों का भी आपको बताती हूँ, because obviously कोविड जब हिट हुआ था 2020 में, तो आप समझ लें एक तरीके से, अगर मैं पर्सनली प्लीज अपनी बात करूँ, तो मेरा उस वक्त ना उरूज एकदम नहीं हो रहा होता है कि एकदम बहुत सारा कुछ काम आ गया, ट्रैवल भी कर रहे हैं और शुगल भी चल रहा है एंड एवरीथिंग्स ग्रेट, बट what ended up happening was that COVID hit. अब जाहिर सी बात है वो एकदम हर चीज स्टॉप पे आ गई, आपको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है. सो आई फेल्ट रियली सैड अबाउट इट, ऑल्दो यस मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स एकदम से रोज अप, लाइक जूम का किसी ने नाम नहीं दे, नाम और निशान ही नहीं, एक स्काइप पता होता था हमें शायद, एंड मे बी व्हाट्सएप कॉल एंड लाइक बट ऑनेस्टली वी नेवर रियली थॉट ऑफ जूम एवर. अपीयरन होता था हमारा एक, उस पे हम लोग करते थे अपनी मीटिंग्स, बट दैट्स अबाउट इट. क्लाइंट्स के साथ तो हम हार्डली कभी भी कोई मीटिंग करते थे ऑनलाइन. But obviously COVID changed everything. Yes. It opened up a lot of avenues for a lot of people. Interestingly enough, मेरे लिए why I was really sad by it, and अभी भी मैं थोड़ा सा sad होती हूँ, because मेरे लिए being around people and being in a physical जो आपका touch point होता है ना, उसकी value ही कुछ और है. However, having said that, just the fact that people do have this accessibility changes the game completely. अभी recently आपको पता है बहुत ही ऐसा मुझे opportunity मिली है जो कि शायद मुझे ना मिलती अगर तो ये avenue हमारे पास नहीं होता. I was conducting a webinar on psychological safety, by the way, very relevant to our topic today, with about 400 people that were situated in different countries, and what I was saying was being translated in real time, and I couldn't believe it, just because of the impact, again जो कि हम बात भी कर रहे हैं इतनी सारी, कि कितना impact अब हम create कर पा रहे हैं because we have remote working. And I think it's changed the game. A lot of organizations are working on a hybrid model. हम खुद बहुत flexible हो गए हैं as Carnelian since we've had this accessibility to remote working. However, a lot of people might argue कि इसकी वजह से उनका वर्कलोड भी बढ़ गया. तो अगर आप वर्क लाइफ इंटीग्रेशन को थोड़ा और मजीद जाके स्टडी करो, तो उसमें यही हो रहा है कि आपका पर्सनल और प्रोफेशनल बहुत ज्यादा मर्ज हो रहा है. तो पहले हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते थे, अब वो दोनों ही चीजें इट्स लाइक यू आर वर्किंग अराउंड द क्लॉक. तो इसकी वजह से लोगों को लगता है हम तो यार शायद ज्यादा काम कर रहे हैं, तो ये क्या चक्कर है, एंड वो पर्सनल टच पॉइंट भी अब नहीं है. तो honestly, there are both arguments. I will say that if done right, remote working is an absolute asset. Great, it's your opinion, but even being online, like people are more easily get 100%. accessible to the बिल्कुल. when they are doing the international meetings. Love, yeah, So- 100%. Like I said, इससे आपका जो accessibility to ग्लोबल फोरम हो गया है वो शायद पहले नहीं था आपके पास. Yeah. Agree. So yes, what are your thoughts about SDG goal number 3, like which is mental well-being? Okay, so again well-being and SDG की अगर आप बात करें, this अब आप देख सकते हैं कि कितनी ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को आप बस देखो कि वेल-बीइंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू हो गया है ग्लोबली, व्हिच इज व्हाई इट्स एन SDG 3 है ही 17 आपके पास. सो आई मीन it's amazing, and it just goes to show the importance of overall mental health, of course emotional health. There are people, अब हमारा वो दौर आ रहा है where people actually opening up about their traumas and their experiences, there's their anxiety, their everyday problems and stuff that they may have experienced in childhood. ये ऐसी चीजें जिसके साथ लोग पहले नहीं खुल के आते थे बाहर, ये टैबू टॉपिक्स होते थे आपके लिए. अब पीपल हैव फाइनली स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट देम, एंड दिस इज बिकॉज ग्लोबली इस पे रिकग्निशन हो रही है, ग्लोबली इस पे काम हो रहा है. पहले थेरेपिस्ट, ऑल ऑफ दैट, काउंसलर्स, ये चीजें पाकिस्तान में तो नॉन एग्जिस्टेंट ही थी, बट अब आप देख रहे हैं कि उसके ऊपर कितना ज्यादा काम होने लगा है, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट ट्रूली इज. इट हैज अ डायरेक्ट लिंक विद, अगेन वही हेल्थ की मैंने आपसे पहले भी बात की, हेल्थ के साथ इसका बहुत ज्यादा डायरेक्ट लिंक है. उसके अलावा एक्सेस टू एजुकेशन, ग्रेटर अवेयरनेस, मोर इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी,
all of this has something to do with well-being. So like I Yes. said, it's not a concept that you can take in isolation. World over इसकी बहुत ज़्यादा importance बढ़ती जा रही है. मेरी सिर्फ इसमें request I think खास तौर पे अपनी आवाम से and student population से यही होगी that there are things that do impact us a lot, especially during this time of our lives when we are studying. Or this is that time where you can already start making a difference. Yes. And आप देख रहे हैं वेलबींग इसलिए भी ज़रूरी होता जा रहा है इसमें बिकॉज लोग जो कुछ आप अपने चाइल्डहुड में आपके एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो कुछ आपके बढ़ते हुए टीनेज लाइफ में एक्सपीरियंसेस हुए हैं, Yes. जो कि 20s में एक्सपीरियंसेस हुए हैं, दे शेप योर डिसीजंस एंड अ मेजॉरिटी पार्ट ऑफ योर डिसीजंस दैट यू विल टेक इन द लेटर हाफ ऑफ योर लाइफ. सो If इफ you are दिस your mentality. 100%. They- So if it's not done right, then it can have a major impact on the rest of your life. So I think now is the time that we start working. Even on. I do agree. When you are not mentally prepared, even your physical condition is, doesn't seem well. to you. 100%. It's all interconnected. Yes. So thank you so much for being with us. It really has been a great time with Thank you. you so much. Thank you for sharing so many interesting things with us. Thank you. Thank Pleasure you, by is the all Char mine. Pavilion. Thank you. Thank you.